In this session, we will learn how to create text files, how to read data from text files, and how to write some data in text files. So let us start creating a text file and applying different operations on text file by using Python code. Let us first understand text files with practical example. I am creating our text file f1 using open function. Open, pass first parameter you have to pass either file name or file path. So let us give it a file name python.txt and opening it in write mode. Now close this file and see first of all where this file will be created. Your code has been executed. Now since you haven't passed any path, so this file will be present in your same directory in which your Python is installed. So you can open this file from this terminal. Write name of the file is Python. See here, with Python name there are two files, python.dxex. This is executable file, but I have created a Python text file. So this is the file which I want to open. Text file, Python text file. I want to open this file and see this file has been opened, Python text file, but in this file up to now there is not any content is present. तो क्लियर है दो स्टेप्स. जस्ट आपने क्या किया है, फाइल को अभी क्रिएट किया है, इतना ही किया है. अभी उस फाइल पे आपने कोई प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं किए हैं. मीन्स नाइदर यू हैव एंड रीड योर फाइल एंड नाइदर यू हैव written anything in your file. Now for writing in a file there are two functions, write and write lines. First I am using write function. With the help of write function you can write any string to your file. Let us write welcome to the world of Python. Save, run. Now open your file and see the content of your file, Python text file. ओपन एंड सी, ये जो लाइन है अभी मैंने लिखी थी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन इज शोइंग हियर इन योर फाइल. नाउ इन द सेम वे you can write as many content you want by using write function. Let us write another line. This is file handling topic. Save,
run. Now open your file and see the contents of your file. Python text file .txt. ओपन एंड सी, एक ही लाइन में आया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, एंड और उसके बाद सेम लाइन में ही है दिस इज फाइल हैंडलिंग टॉपिक. अगर आपको चाहिए कि आप ये नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं देन यू हैव टू एंटर अ न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर फर्स्ट लाइन. f1 डॉट राइट न्यू लाइन. And see the file content. Welcome to the world of Python in first line, and in second line this is file handling topic. In this way you can create your file, and now you can apply as many operations you want. Now if suppose you want to read your file, then for reading a file there are three functions: read, read line and read lines. So let us see all of these one by one. Now open this file in read mode. Now f1 dot read function, and in this read function you have to pass number of bytes you want to read. Suppose I want only 4 bytes to read, and store these characters in a variable x. Now print x. And see, only 4 bytes has been read. Since one character occupies one byte, that's why it is showing 4 characters WELC. Now if you want to read line, then you can use read line function, and this will give you the first line, welcome to the world of Python. Now if you want to read all the lines of your file, then read lines function will be used, and it will return you all the lines in the form of list. It will return list. See here, read lines function has returned a list in which first element will be the first line, then new line character will be there, comma separated with comma, and then next line will be given in the form of list. Okay, now this is all about reading and writing. Now there is another third mode, that is a append mode. What is the difference between write and append mode? If you open your file in write mode, then it overwrites all of the content of your file. It overwrites मतलब मीन्स अगर सपोज आपकी फ़ाइल में ये लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें 2 लाइन्स पहले आपकी फ़ाइल में लिखी हुई है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग टॉपिक. अगर आप इस फाइल को ओपन कर रहे हो फिर से राइट मोड में, तो दोनों लाइन्स डिलीट हो जाएंगी, एंड देन अ फ्रेश कंटेंट विल बी एडेड टू योर फाइल. बट if you want to retain your old data and add another data, then you have to open your file in append mode. See an example of it. Now I am opening this file in append mode. Change W to A. I am opening my text file in append mode, and same write function will be used for adding some content.
write function, and now I want to add another. This is THRIRD, third line. Now open this file, close this file, f1.close, save, run. Now see what happened when you appended the data to your file. Open Python text file, open and see, welcome to the world of Python, this is file handling topic and this is a third line. ये आपका डाटा अपेंड हो गया है, मीन्स प्रीवियस डाटा आपका डिलीट नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ आपके फाइल में शो हो रहा है. बट सी व्हाट हैपेंड इफ यू नाउ ओपन द सेम फाइल इन राइट मोड. Now I want to add a fourth line, but at this point I am opening it in write mode and I want to enter a fourth line. Now what will happen? All the previous data will be lost. आपका जो प्रीवियस डाटा आपका फाइल में जितना भी पड़ा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और सिर्फ एक लाइन आएगी, दिस इज फोर्थ लाइन. See what will be the content of your file Python. Open this file and see आपका जो प्रीवियस डाटा जितना भी है वो लॉस्ट हो गया है एंड सिर्फ जो दिस इज फोर्थ लाइन, जो अब नेक्स्ट नया कंटेंट आपने ऐड किया जस्ट वही ऐड होगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन append मोड एंड राइट मोड. आज के क्लास के लिए, सेशन के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट फाइल्स का ही आगे का पढ़ेंगे कि टेक्स्ट फाइल में और हम क्या क्या कर सकते हैं. अब तक हमने टेक्स्ट फाइल में ये पढ़ा है कि टेक्स्ट फाइल को ओपन क्लोज करना, और टेक्स्ट फाइल के अंदर हम अगर राइट करना चाहते हैं देयर आर टू फंक्शंस फॉर दैट, डूइंग दैट, राइट एंड राइटेंस. And if we want to read some content, then there are three functions: read line and read lines. And we have also covered append mode and write mode, differences between these two.